So last class हम देखते what is thermodynamic system, surrounding, boundary and different types of thermodynamic system में देखते आज हम देखिबा what is thermodynamic variable कौन है। So thermodynamic system कौन an assembly of extremely large number of particles, an assembly of extremely large number of particles having a certain value of pressure having a so an assembly of extremely large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system. Is called a system. मनोर सपोज आम एग्जांपल ना गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम रो सपोज गोटे गैस मॉलिक्यूल आम गोटे कंटेनर रखिया गोटे बीकर रखिया हाँ सपोज आमर ऑक्सीजन किसी ऑक्सीजन गैस आम गोटे कंटेनर रखिया से कंटेनर कौन जो ऑक्सीजन गैस रखिया तार गोटे पार्टिकुलर प्रेशर रहिबो तार गोटे पार्टिकुलर वॉल्यूम रहिबो ताको गोटे पार्टिकुलर टेम्परेचर रहिबो ताको कुआ गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम इट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. Okay, so an assembly of extremely large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system. For example, a large collection of gas molecules, for example, a large collection of gas molecules contained in a vessel is an example of a thermodynamic system. Is an example of a thermodynamic system है सो आम जो भेसेल रे किसी गैस मॉलिक्यूल रखिबा ताले से गैस मॉलिक्यूल गोटे पार्टिकुलर टेम्परेचर रहइबो गोटे पार्टिकुलर प्रेशर रहइबो पार्टिकुलर वॉल्यूम रहइबो ताको हम कहबा कोन और थर्मोडायनामिक सिस्टम बोली कहबा हला. अच्छा तापर हम देखिबा थर्मोडायनामिक वेरिएबल कोन.
thermodynamic variables. Number 2 वाला thermodynamic variables. हम लिखिबा some thermodynamic definitions. Okay. Some thermodynamic definitions. किछि हम thermodynamic रो definition को हमें डिस्कस करिबा. फर्स्ट टाइम देखले thermodynamic system. एटा होची नंबर 1 हला तुमरो thermodynamic system. नंबर 2 हला तुमरो thermodynamic variable हला. Thermodynamic variable kono? Now the variables which determine the thermodynamic behavior of a system are known as thermodynamic variable. The variables which determine the thermodynamic behavior of a system, the thermodynamic behavior of a system are called thermodynamic variables. Are called so thermodynamic variable kono? The variables which determine the thermodynamic behavior. Thermodynamic behavior को जे represent करछि, thermodynamic behavior को जे adequate करछि, movement करछि, ताको होछि thermodynamic variables. The variables which determine the thermodynamic behavior. Thermodynamic behavior कोडा को temperature, pressure, volume हला सेति में एउडा को होछि तमरा thermodynamic variables. The quantities like temperature, pressure, and volume are called thermodynamic variables. Are called thermodynamic. हला ए वेरिएबल गुडा thermodynamic behavior को कोन करछि रिप्रेजेंट करछि हला बा thermodynamic behavior को शो करछि. सेति में the quantities like temperature, pressure and volume are called thermodynamic variables. There are other thermodynamic variables
such as internal energy, ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରେସର P ବୋଲି ଦେବା, ସେମିତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆମେ V ବୋଲି ଦେବା ହେଲା। So there are other thermodynamic variables like internal energy, entropy, etc. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି thermodynamic variables ହେଲା। All the thermodynamic variables can be expressed in terms of pressure, volume, temperature, and ଯେତେ ତମର ଟେମ୍ପରେଚର thermodynamic variable ଅଛି just like entropy, ତାପରେ ତମର internal energy, ତାପରେ enthalpy, gives free energy, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି thermodynamic variable। ସବୁ ଯାକ thermodynamic variable କ'ଣ ପ୍ରେସର, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି। and all other thermodynamic variables and all other thermodynamic variables can be expressed in terms of pressure, volume and temperature ହେଲା। ଯେତେ thermodynamic variable ଅଛି ସବୁଥିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେସର, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟର୍ମରେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର thermodynamic variables। तापरे नंबर 3 आसला इक्वेशन ऑफ स्टेट। नंबर 3 आसला इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो मु तुम गोटे जिनस ये कहू चाहूँगी तमर जो फिफ्थ सेमिस्टर अच्छी थर्माल फिजिक्स। सो मु तुम यूट्यूब चैनल माध्यम सब गुड़ाक वीडियो लेसन डिस्कसन करी। तुम्हें से लेसन रे तुम्हें जिनस गुड़ाक बुझीपर थर्माल फिजिक्स सब टॉपिक्स बुझीपर ता सहित तुम्हें यही प्रकार प्रोसेस रे नोट्स पाइपर है। मु प्रति जिनिस डिस्कसन करी नोट्सटा मेंटेन करुच्ची। तुम्हें गोटे एक्सट्रा खाता गोटे कर नोट्स गुड़ा सब प्रोग्रेस कर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ थर्माल फिजिक्स को मुझे डिस्कसन करी व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तुमको बहुत हेल्पफुल हम सेमेस्टर एग्जाम पे से गुड़ा कर तुम सब लेटेस्ट अपडेट करने मोर जो यूट्यूब चैनल अच्छी फिजिक्स विथ बालाजी सर आपको सब्सक्राइब कर तुम जिते जदि वीडियो अपलोड हम ताकू तुम फास्ट नोटिस तुम्हें पाइपर नोटिफिकेशन तुम्हें पाइपर वीडियो गोटे आसिले नुआ वीडियो आसिले आसपर सप्ताह को मिनिमम 3टा कि 4टा मु लेसन एथरे पोस्ट करी यूट्यूब रे अपलोड करी तुम्हें तार नोट्स पाइपर है। जी थर्माल फिजिक्स कोर्स अच्छी सब जगह कोर्स मु डिस्कसन करी ता सहित तुम सेमिस्टर रे जमी आसुची ता अनुसार सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करी सब थ्योरी पार्टा डिस्कसन करी से भलसे पढ़ापढ़ी कर आशा करुँच। ओके, सो ए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये गोटे फ्री चैनल कम्प्लीटली क्या किसी पैसा पत्र निना जीरो फीस फॉर द स्टूडेंट्स। सो तुम एगुड़ा टे देख आउ चैनल को अधिक अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर। ओके, देखिए आम आ गए जिनस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन in thermodynamics the relation between
the relation between pressure, volume and temperature is called its equation of state hala. Thermodynamics रे relation between pressure, volume and temperature is known as its equation of state. It is given by PV equal to nRT. This is the equation of state. hala पचारियो परीक्षा रे what is equation of state तम लिखियो the relation between in thermodynamics the relation between pressure, volume and temperature is known as its equation of state. PV equal to nRT. hala हम जति n equal to 1 नबा for 1 mole of the gas केते equation of state केते PV equal to RT. hala for 1 mole of an ideal gas the equation of state is n equal to 1 पके दियो केता सु PV equal to RT. hala এটা হচ্ছে নম্বর 3. তারপর নম্বর 4 আসলা thermodynamic process. So thermodynamic process kono a thermodynamic process is said to be taken place if the thermodynamic variables of the system change with time. So thermodynamic process kono a thermodynamic process is said to be taken place if the thermodynamic variables of the system change with the time. ताको हम कहबा thermodynamic process. कोन thermodynamic process अछि? So गोटला isothermal process, isobaric process, isochoric process and adiabatic process. hala so it is of the following types. It is of the following types. Number 1 ala isothermal process. Number A. Isothermal process. Isothermal process kono a thermodynamic process that takes place at constant temperature. Good system रे जदी temperature constant रहइबो ताको हम कहबा isothermal process. A thermodynamic system
that takes place, a thermodynamic system that takes place at constant temperature a thermodynamic system that takes place at constant temperature is called isothermal process. It's called isothermal process. So isothermal process kono good system re the temperature constant if the temperature of the system remains constant, then this is said to be isothermal process. So a thermodynamic system that takes place at constant temperature is called your isothermal process. Sindi number 2 asla tomoro isobaric. Number B, isobaric process. A thermodynamic process that takes place at constant pressure is called isobaric process. It's called so ଗୋଟେ thermodynamic system ରେ ଯଦି pressure ଟା ଯଦି constant ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା isobaric process. Number C, isochoric process. Isochoric process. Isochoric process. Isochoric process kono? A thermodynamic process that takes place at constant volume ହେଲା so ଯଦି ଗୋଟେ constant volume ରେ ଯଦି ଗୋଟେ thermodynamic process carry out କରିବ ବା movement କରିବ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମେ isochoric process. So a thermodynamic process that takes place at constant volume is called isochoric process. Isochoric process ହେଲା तापरे नंबर डी आसला एडियाबेटिक प्रोसेस. नंबर डी एडियाबेटिक प्रोसेस. ହେଲା एडियाबेटिक प्रोसेस कोन
से सिस्टम देखि हीट जाई परियोनी कि से सिस्टम रे जा हीट अछि से पद को आसी परिबो नाही हला ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन व्हिच नो हीट एंटर्स द सिस्टम or leaves the system is called adiabatic process hala so that means it does not exchange heat to the surrounding heat सहित surrounding सहित heat exchange कर परियो नै बाहर heat system भितर जाई परियो नै कि system heat बाहर को जाई परियो नै हला ताकू का जो हम adiabatic process so a thermodynamic process in which no heat enters or leaves the system. A thermodynamic process in which no heat enters or leaves the system is called adiabatic process. सिस्टम भितर किसी हिट जाई परियोनी बा सिस्टम भितर जो हिट अछि से मते बाहर को आसी परियोनी ताको हम कहबा adiabatic process. So different the different thermodynamic processes hala isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process कोन हमें देखले hala. So isothermal process कोन a thermodynamic process that takes place at constant temperature is called isothermal. In isobaric process kono a thermodynamic process that takes place at constant pressure is known as isobaric. In isochoric process kono a thermodynamic process that takes place at constant volume is called isochoric process. In adiabatic process kono now it is a system in which no heat enters the system or leaves the system is known as your kono adiabatic process. These are the different thermodynamic processes. तापर हमें देखिबा आउट इंपोर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम हला इक्विलिब्रियम का कहबा थर्मोडायनामिक प्रोसेस रे हां हमें इक्विलिब्रियम का कहबा व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ ए system. So thermodynamic equilibrium का कहबा so a system is said to be in equilibrium of a system कोन a system is said to be in equilibrium if its macroscopic quantities a system is said to be in equilibrium if its macroscopic quantities like temperature, pressure, volume, etc. do not change with time. ହେଲା so a system is said to be in equilibrium but system रे equilibrium केतलो कहबा जेतलो तार टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम किछि चेंज हबोनी कांस्टेंट रहइबो से सिस्टम रो टेम्परेचर कांस्टेंट होतु कि चेंज होनुतु
प्रेशर कांस्टेंट रहथु कि चेंज होनथु वॉल्यूम कांस्टेंट रहथु ताहाले से सिस्टम गुडा को जोड़े इक्विलिब्रियम सिस्टम हला सो ए सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम डू नॉट चेंज विथ टाइम ओके so it is of the following types it is of the following types हला यार कौन कौन टाइप अछि so it is of the following types तार कौन कौन टाइप अछि नंबर 1 होला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 होला केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 3 होला थर्मल इक्विलिब्रियम so number 1 आसे हम देखिबा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम mechanical equilibrium हला so mechanical equilibrium कोन if there is no macroscopic movement if there is no macroscopic movement if there is no macroscopic movement like temperature pressure volume mass composition etc between the system and its surrounding between the system and its surrounding then the system is said to be said to be in mechanical equilibrium so mechanical equilibrium kono if there is no macroscopic movement like temperature pressure volume mass composition etc between the system and its surrounding जदि system और surrounding भितरे temperature volume pressure तापरे mass composition किछि जदि exchange हो नथुओ ताको हम कहबे कोन mechanical equilibrium if there is no macroscopic movement like temperature pressure volume mass composition etc between the system and its surrounding then the system is said to be in mechanical equilibrium hala तबरे mechanical equilibrium पर आसला नंबर 2 chemical equilibrium नंबर 2 आसला तमरो नंबर 2 chemical equilibrium hala chemical equilibrium kono if the composition of the system remains constant बुझी पड़छ ने कंपोजिशन जो को प्रकार मॉलिक्यूल
से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कि तमर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओके को प्रकार मॉलिक्यूल जदि सिस्टम रो कंपोजिशन रे किछि जदि चेंज आसुनो तो कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम देन दिस इज सेड टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम हला सिस्टम रे को प्रकार पार्टिकल अछि को प्रकार एटम अछि को प्रकार मॉलिक्यूल अछि तार कंपोजिशन रे किछि चेंज आसुनो तो ताको हम कहबा केमिकल इक्विलिब्रियम इफ the composition of the system if the composition of the system remains constant with time system remains constant with time then it is said to be in chemical equilibrium so system composition remains constant with time then it is said to be chemical equilibrium ହେଲା तापरे नंबर 3 आसला तमरा थर्मल इक्विलिब्रियम हम देखिया तुमरो थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर 3 हला तुमरो thermal equilibrium thermal equilibrium कोन ना if the temperature of the system if the temperature of the system यदि सिस्टम रो टेम्परेचर ता कांस्टेंट होतो ताको हम कहबा कोन thermal equilibrium कहबा if the temperature of the system remains constant with time then it is said to be in thermal equilibrium so if the temperature of the system remains constant with time then it is said to be in thermal equilibrium hala so एडा सब होची equilibrium of a system and different types of equilibrium हम देखले mechanical equilibrium कोन chemical equilibrium कोन thermal equilibrium कोन देखले and in thermodynamics we shall deal only with the concept of thermal equilibrium thermodynamics रे हम thermal equilibrium ऊपर
आम डिटेल डिस्कस करवा ओके सो सब मोर पिला मानंकु मोर एडवाइस जे तमे एई लेसन गुड़ारू भलसे बुझिबो ता सहित एथरे जिन नोट्स लेखा होची हाँ नोट्स मते मु तुमको बुझौची ता सहित नोट्स मते दउची ए नोट्स को कोन करियो तमे एथिरु तमे नोट्स फॉलो हेगी तम खाता रे लिखिबो ओके डिटेल नोट्स करियो आउ तुमर थर्मल फिजिक्स रो ईच एंड एवरी टॉपिक पूरा पेपर रो सब टॉपिक मु डिस्कशन करबी आउ सेथरु सब शॉर्ट क्वेश्चंस सेमेस्टर परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चंस केमि आछी प्रीवियस रो क्वेश्चन आछी केमि ताको मते डिस्कशन करबी सेति समस्त भलसे नोट्स लिखिके भलसे पढ़ापढ़ी करियो ओके थैंक यू।